ओके सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज का इंटरव्यू हमारा बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है फॉर ऑल द बिगिनर्स हु वांट टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। तो इसमें आज हमें पता लगेगा कि राइट म्यूचुअल फंड्स कौन से होते हैं, एग्जैक्टली म्यूचुअल फंड्स क्या होता है, विद द हेल्प ऑफ हसनैन भारेनवाला, जो फाइनेंशियली एम्पावर्ड पुणे के चीफ एम्पावरमेंट ऑफिसर हैं। हसनैन एक सेकेंड जनरेशन फाइनेंशियल प्लानर और इन्वेस्टमेंट एडवाइजर हैं, जिन्होंने नए इन्वेस्टर्स को इक्विटीज का पावर समझाने और मार्केट की वॉलेटिलिटी को नेविगेट करने में मदद करने का जुनून रखा है। अपने फादर से मेंटरशिप लेते हुए, जो 32 साल से एडवाइजरी एक्सपीरियंस रखते हैं, हसनैन ने म्यूचुअल फंड्स और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस के जरिए इंडियन इक्विटीज और स्टॉक मार्केट में पैसिव इन्वेस्टिंग का आर्ट मास्टर किया है। इसके अलावा हसनैन दुबई में सीनियर प्रॉपर्टी कंसल्टेंट के रूप में काम कर चुके हैं, जहां उन्होंने क्लाइंट्स को कंसल्ट करने और एजुकेट करने का वैल्यूएबल एक्सपीरियंस भी गेन किया है। तो आज हम उनकी इनसाइट्स लेने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक है। स्वागत है आपका हसनैन। थैंक यू वेरी मच। सो लेट्स बिगिन। बताइए क्या सवाल है आपके म्यूचुअल फंड अपकमिंग इन्वेस्टर्स के लिए। So I'm gonna ask you some of the basic question जो मतलब बिगिनर्स के होते हैं जब वो एंटर करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड्स में और वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। So without wasting your time, I'm gonna ask you the question which will be visible on your screen. So the first question is कि exactly म्यूचुअल फंड होता क्या है और ये कैसे वर्क करता है बिगिनर्स के लिए, खास करके इंडिया में। So the word mutual means आपसी, पारस्परिक, like the famous saying, सबका साथ सबका विकास। तो म्यूचुअल फंड्स जो है, it is basically lakhs of investors coming together, pooling their money into a single fund, and then this fund is professionally managed by some of the most qualified fund managers of the country. Fund management is one of the highest paid and respected jobs also overall in finance. So you can say your money goes to these professionals who are handling this money. And overall, the mutual fund industry has more than a 30-year track record in India, and currently is managing over 60 lakh crores. So it is a huge sum. And when it comes to mutual funds, it's a very simple product. This way, there is not much technical understanding which is required from the investor, but there are a certain rules which, if somebody follows, they will become financially free. So a lot of those rules are, what do you say, dependent on your discipline and patience mainly. So if one follows that, they will become financially free. Next question. Okay, so what are the different types of mutual funds are available in India? तो आप एक एक के बारे में briefly बता सकते हैं? So there is a huge range of mutual funds which is available in India. But the main three categories, I would say, would be the debt mutual funds, equity mutual funds, and hybrid mutual funds. Now, there are different mutual funds which you can use for different assets also. Like, for example, apart from this equity, debt, hybrid funds, there are certain mutual funds which target gold, certain sectors, or even real estate in general. But those are sector funds, and come down to the main three, which is debt, equity, and hybrid. So debt funds are mainly secured kind of mutual funds for somebody who is a conservative investor. किसी को अगर ज्यादा रिस्क नहीं लेना है और शॉर्ट टर्म के लिए पैसा कहीं पे पार्क करना है, जिसमें मतलब इधर बैंक अकाउंट जितना या एफडी जितना इंटरेस्ट जनरेट हो जाए, और वो सेफ्टी इंस्ट्रूमेंट के लिए हम ज्यादातर डेट म्यूचुअल फंड यूज करते हैं. Now a lot of debt funds invest into different kinds of bonds, government securities. हर डेट फंड का भी ऑब्जेक्टिव अलग अलग रहता है, लेकिन जो भी उसका ऑब्जेक्टिव रहेगा, द फंड मैनेजर्स जॉब इज टू इन्वेस्ट एज पर दैट पर्टिकुलर क्राइटेरिया ओनली. सो दैट इज द डेट म्यूचुअल फंड्स. So for shorter term, one can consider those kind of debt funds, which would include your liquid funds or your bond funds or your arbitrage funds. Then the second category, my favorite, would be the equity funds category. This is mainly for long-term investors, people who really want to make good growth by using that compounding effect. इसको मतलब long term के लिए आपने invest किया, अच्छे stocks में invest किया, and you are waiting for those businesses to grow. But all of this takes time. कोई भी business एक साल में double नहीं हो जाता. So technically, when you are investing into an equity fund,
you should have the same mindset as if you are investing into a new business altogether. And you are giving that baby, time to grow, get famous, become bigger, and then, that profitability comes back to your returns in general. So equity funds maybe largely there are three categories, you can say. One is your large cap funds, which focuses on the 100 biggest listed companies of India. Then you have your mid cap funds, which focuses on rank 101 to rank 250. So this is your mid cap funds. So all this ranking is done based on the size of the company or the market cap. So simple way to take a market cap of a company is the number of shares multiplied into the share price. So the जिसका figure सबसे ज़्यादा है वो rank 1. And then so on. The first 100 would be your large cap. Next 150 would be your mid cap. And then rank 250 onwards you have your small cap. So these are largely the categories that one can invest into the mutual funds. Then we come into hybrid funds. So what hybrid funds is, these are little conservative, this is what you say a mix of risky and conservative. So you can say it is moderately risky because in these funds, one certain allocation is given to the equity and one certain allocation is given to the debt funds. So a lot of funds do 65-35 or 70-30 depending on the fund objective. So what happens is that one sector, your equity fund is linked to all the equity investments, which is, in the risky category looking forward to making good returns. On the other hand, the debt side manages the conservativeness. So what happens is that in case, the market is going up, a little bit equity allocation would increase. When the market is going down, a little bit of debt allocation would increase to take a little more safe stance. So mainly the categorization of hybrid funds would be balance funds and balance advantage funds. We use these to give a mixed option for somebody who is not looking forward to take too much risk also but doesn't want to be too safe also. So balance funds would be the next the third category which we invest. Next question please. How should the beginner go about selecting the right mutual fund to invest in? मतलब कोई beginner कैसे या किस में rightly invest करे mutual fund में और वो कौन से factors को consider करे before entering into that? So कोई भी नया काम शुरू करने के पहले I usually say कि भाई मतलब कोई भी फील्ड हो उसमें आप एक्सपर्ट की गाइडेंस लो सबसे पहले तो बिफोर यू स्टार्ट गेटिंग इनटू म्यूचुअल फंड एंड सिलेक्टिंग डायरेक्टली कि भाई मुझे ये वाला फंड करना है वो वाला फंड करना है वो बाजू वाला कर रहे हैं तो दैट इज नॉट द राइट वे टू गो अबाउट इट द मेन थिंग वुड बी टू फर्स्ट गेट एन इंडिविजुअल असेसमेंट डन कि व्हाट इज बाय एन एक्सपर्ट फॉर एग्जांपल योर एज मैटर्स अ लॉट व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग फॉर एग्जांपल द प्लान बिटवीन अ 20-year-old's mutual fund plan and a 50-year-old's mutual fund plan would be completely different. Because one, still has, about 30-40 years of their career left, while the other one might just be in the final 10-20 of their career. So depending on what their income stream is, how much risk they can take, what is their age, what is the requirement of this fund. So for example, somebody in their 20s or 30s will have more than, 20 years to save towards a bigger target. कि घर लेना है या बच्चों का एजुकेशन करवाना है तो बड़े टारगेट के लिए टाइम रहता है हमारे पास. So you are able to take more risk within that. But somebody who is looking forward to, spending their investment within the next 5 years or has kept the money aside for something which is 1 or 2 year expense only. तो उसके लिए फिर वो fund selection अलग होगा. So basically, the main thing is that before you select the right mutual funds, it is important to make a plan. And then in considering your age, your goals and everything, and then the right funds are selected based on your goal. So that is how I would suggest somebody to go about it. Next question please. अगर सपोज मुझे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है एज अ बिगिनर फॉर द फर्स्ट टाइम तो मेरा क्या प्रोसेस होगा इन्वेस्ट करने के लिए? So before we start into mutual funds, become an investor. तो कोई भी इन्वेस्टर जब एंट्री लेता है तो उसका पहले हमें केवाईसी करवाना पड़ता है, which is your know your client.
To put it in very simple terms, आप इन्वेस्टमेंट के अंदर एडमिशन ले रहे हो तो आपका आईडी कार्ड बनाना जरूरी है कि you are registering as an investor. So now for this KYC, as per SEBI is a very good regulator. Every year they keep increasing the rules, and now what you say, after fine tuning everything, the main requirement for somebody to start mutual funds or financial investments is that all your documents have to be perfect. Yes, so for example, my name is Hasnain Bahrainwala. So now if you open my passport, my bank statement, my PAN card, my Aadhaar card, everywhere you will see the same spelling in the same format. So this is now 100% necessary for one to, even sign up with an advisor or, start any kind of investment. कि सबसे पहले तो आपका जो नाम है वो हर जगह हर डॉक्यूमेंट के अंदर परफेक्टली रिटर्न होना चाहिए. With second step, again, would be very similar to when I answered previously, that appoint an expert to, again, sit down and analyze with your goals, your age, your income stream, कि यहाँ से मतलब, perspective क्या है, आगे का goal क्या होने वाला है, कितना साल वो goal पहुंचने में लगेगा, how much input from your side will be required. ये सब चीजें अगर प्लानिंग में रहती है ना, तो एंट्री और एग्जिट दोनों इजी हो जाते हैं और क्लियर हो जाते हैं लोगों के लिए कि उनको कैसे करना है. फिर द थर्ड स्टेप, as I said, first is your documents, second is you appoint a good expert, and third would be to sign up with a reputed online platform which is trustworthy and registered, so that you know that your money is being going through a proper channel to the mutual funds or to the bonds or wherever you are trying to invest. The channel in the middle, the online platform needs to be good and compliant basically with all the rules and requirements which are there. So yeah, that would be it. Thank you. The next question. Some of the best mutual fund options for the salaried individual in India, अभी अगर at the moment हम देखें तो. To see, there are two ways to invest into a mutual fund. One is that you give a lump sum amount, which is a one-time investment, and you basically take the guidance of the advisor on how to deploy this particular lump sum. So for example, when markets are at a high, we take a bigger amount, invest them into a safer fund, and then धीरे धीरे करके उसको deploy करते हैं into the equity aggressive funds. But for a salaried individual, somebody at the start or the mid of their career, where there is a regular income coming in, what I usually recommend people is that at the start of your career, try saving about 10% of your income into SIPs. And then जैसे जैसे आपका career बढ़ते जाता है, try saving even up to 40% of your salary into the mutual funds or into SIPs, or basically save that money. क्योंकि ये आपका ही पैसा है जो आपको कल जाके काम लगने वाला है. This is your money which you are saving for a good time in the future or for a bigger goal in the future. So the best way for a salaried person to get into mutual funds is by investing into what you call a systematic investment plan, which is an SIP. So once you set an SIP, so for example, somebody who is receiving their salary on the first of the month, it would be good if they have their SIP date set for the 5th of the month. So what happens is at the start of the month only, whatever money they wanted to save easily gets saved. Now, for people who might have read the book Rich Dad Poor Dad or any other financial planner's book, वो आपको यही कहेगा कि you are supposed to spend after you have done your savings, not make expenses and save what is left. क्योंकि अगर हम वो second path पे जाते हैं where we try to save what is left, so I can say with experience that nothing gets left. You will spend whatever you want to spend. So it is better for a salaried individual to at the start of the month only have that date where that dedicated amount goes into SIPs, and then start investing into a basket of funds which are meant in line with their long-term goals and objectives. So that would be the best thing to do for a salaried person, an SIP. Next question.
किसी बिगनर को अगर स्टार्ट करना है इन्वेस्टिंग म्यूचुअल फंड्स में तो कितना मनी का रिक्वायरमेंट होगा? अभी आपने जो एसआईपी समझाया, तो 5000 मंथली एसआईपी सफिशिएंट है या नहीं? So, as per the regulatory requirement, the minimum to start an SIP into a mutual fund is only 100 rupees. So it is not even necessary that a salaried person can start it. Even somebody who is just getting pocket money from home can start and get a taste of, what the SIP is, what a mutual fund is, and they can, start investing only from 100 rupees per month. तो वहां से भी शुरुआत तो हो सकती है. मेन थिंग इज कि मतलब इट्स लाइक गोइंग टू द जिम. मतलब पहले एक बार चले जाओ, थोड़ा थोड़ा शुरू करो, फिर ऑटोमेटिकली आप उसे बढ़ाते जाओगे एंड देन यू विल गेट इन लाइन. एक हैबिट इनकलकेट करने के लिए somebody can start even saving 100 rupees a month and go on from there and then increase as their income increases in time. So now, is 5000 rupees a sufficient SIP amount? So see, now a lot of people start off at 2000, 5000, 10,000, that is there, but it all depends on what your current expenses are also like. So for example, if you are somebody who lives a lifestyle which is at 25,000 rupees a month, कि मैं आपका घर का खर्चा जो है वो सब 25,000 रुपए में खत्म हो जाता है. So for retirement, saving 5,000 rupees a month will be sufficient, because you will be able to generate that corpus in 20-30 years time, और उसमें से फिर जो इंटरेस्ट निकलेगा फिक्स बेसिस पे after you made that corpus, that will be sufficient to sustain your 25,000 rupee lifestyle of today 30 years from now, which will actually cost you 2,50,000 at that time 30 years from now, counting inflation and everything approximately becomes 10 times, you can say, in within 30 years. आज का 25,000 का खर्चा कल का 30 साल बाद 2.5 लाख 2.5 लाख रुपए जितना हो जाएगा. But now if you are somebody who is currently living a lifestyle which costs you 2.5 lakh rupees per month, so then this 5,000 won't be sufficient to sustain your lifestyle after retirement. Then you have to start saving somewhere around 50,000 rupees a month, so that you can have that ample amount, and then from there you can generate 25 lakhs a month to sustain the current lifestyle that you have 30 years from now. Otherwise, what will happen is that in your earning time you will have one good lifestyle, and then in your retirement you will have to take it down much more because you spent more in your earning time. So for retirement, then there will be lesser money available to you, or you won't be able to sustain your lifestyle. So savings need to be at least 10-20% of whatever you are monthly spending, so that over the time you can have that corpus ready to generate that income in the future as well for yourself. That would be next question. What are the tax implication of investing in mutual funds that beginners should be aware of? So when a person is managing their own direct shares portfolio, every time they sell a share for a profit, a certain tax needs to be paid. So it could be short-term tax or long-term tax. But when you come to mutual funds, whatever shares the mutual fund buys internally and sells internally, the mutual fund internally does not have to pay any tax on it. So the final tax is to be paid by the investor when they are withdrawing for their requirement. So at the end of their investment tenure, when they withdraw, they have to pay taxes on that. So now taxation, broadly to split it, would be different between the debt funds and the equity funds. So in the debt funds, because there is a certain interest type of income being generated, so the debt funds will be taxed as per your income slab. So now if you are in 10% slab, you will be charged at that slab. But if you are at a 30% slab, then you will have to pay 30% of your income from debt funds as the tax for the fund. But when we come to equity funds is not linked to your income tax or your tax slab. Equity funds has a flat tax slab regardless of what income slab you fall into. So in equity, it is very simple that short-term gains will be taxed at 20%. This was recently increased in the last budget. And
when we talk about long-term capital gains tax, which is after 1 year of equity investing, the long-term capital gain tax of 12.5% gets levied on the profits, basically. And around 1,25,000 rupees per year in capital gains you can save. So, for example, if somebody has invested about 1 lakh rupees, which got, which increased to about 3 lakh rupees. So, from 3 lakh rupees, the tax of 12.5% will not be paid on your 1 lakh rupee investment because that was your capital. Then 1,25,000 rupees is exempt from tax. इतना लेवी हमको दिया हुआ है, तो फिर बचा कितना 75,000. ये 75,000 पे you have to pay 12.5% tax. So that would be, how it is tax. So that 1,25,000 exemption is also there. Capital is also separate, only on the profits. So this would work out to be the lowest tax rate that you have to pay for an investment in general on the profits. So that is why I feel that in terms of even taxation, equity mutual funds have the best tax rate compared to any other investment which is there in the market. Next question, please. When we talk about the beginners, तो मतलब उन्हें जब हम इंडेक्स फंड्स की बात करें तो जो आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो रहे हैं इंडिया में, तो अगर बिगिनर्स को उसमें अप्लाई करना चाहिए या इन्वेस्ट करना चाहिए इंडेक्स फंड में, अगर करना चाहिए तो उन्हें क्या कंसिडर करना चाहिए पहले इन्वेस्ट करने से? So index funds have actually become very popular. Now for somebody who watches cricket or फुटबॉल, तो आपने देखा होगा कि सारे एड्स मतलब गेम के बीच में आपको ये इंडेक्स फंड्स के ही आते रहेंगे. तो वो मतलब अभी उसका बड़ा व्हाट इज एन इंडेक्स फंड. एक इंडेक्स फंड वो होता है, अभी जैसे बहुत सारे आपने इंडेक्सेस के नाम सुने होंगे, जैसे निफ्टी 100 इज देयर, निफ्टी 50 इज देयर, निफ्टी 250 माइक्रो कैप, निफ्टी 250 स्मॉल कैप. Now, these are all different indexes which are tracking a particular sector or section of companies. तो जैसे अगर आप निफ्टी 100 फंड में जाएंगे, निफ्टी 100 इंडेक्स फंड में जाएंगे, तो उस इंडेक्स के अंदर जो भी ये 100 कंपनीज है, टॉप 100 कंपनीज विच आर देयर, उनके शेयर प्राइस का जो भी मूवमेंट होगा, वो इंडेक्स का जो भी मूवमेंट होगा, वो सेम का सेम रेप्लिकेट होगा आपके फंड के अंदर. So an index fund is nothing but something which copies an index and उसको mimic करता है with a minor tracking error, you can say. So with a little tracking error, but it completely replicates whatever the movement of the index is. So now depending on, you have to study the indexes for that. कि भाई निफ्टी 100 इंडेक्स फंड है, इसका मतलब ये टॉप 100 कंपनीज का इंडेक्स फंड है. निफ्टी मिड कैप अगर इंडेक्स फंड, निफ्टी 150 इंडेक्स फंड है, तो वो मिड कैप सेक्टर का इंडेक्स फंड है. तो दीज आर ऑल अगेन गेटिंग मोर एंड मोर पॉपुलर. दूसरा क्या है कि दिस लॉट ऑफ फंड हाउसेस आर टाइंग अप विद एनएससी, बीएससी एंड इवन कमिंग आउट विद मोर इंडेक्सेस, मोर ट्रैकिंग विद इन द मार्केट, so that more indexes are created, and based on those indexes more index funds will be launched in the future. So overall, I would not say that one only should invest in index funds. Like in my experience, actively managed funds have done over the index because their investment objective is only to beat the index. So what one can do is that in case you have about 5 funds in your mutual fund portfolio, you can have 1 or 2 index funds, but try to study more on actively managed funds as well, because their job is beating the index. The whole point of having a fund manager is to do better than the index performance. तो वही है कि इंडेक्स फंड्स अच्छे हैं, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए. किसी ने अगर स्टार्टिंग करना है, इट इज अ गुड वे टू एंटर द मार्केट. बट वंस यू आर बिकमिंग अ मोर मैच्योर इन्वेस्टर, मेक श्योर इंडेक्स इज अ पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो एंड नॉट योर एंटायर पोर्टफोलियो, because there are better mutual funds actively managed which do better than index funds also. So those options are available for investors very easily.
Next question, please. Are there any common mistakes that beginners make when they start invest in mutual funds? Agar yes, so how can we avoid that? When I meet new investors in general, so I see that most of them first they try it out on their own. Then I get a lot of people who come here and sit with me and consult with me, and I can see that there are these certain basic mistakes only which all of them are making. Okay, it is the same mistakes, the same pattern in which these investors are mostly making. One of the main things is that they invest without a plan. So first thing that when you are investing, you need to be very clear on your objectives. कि मैं क्यों पैसा जमा कर रहा हूँ, किस चीज के लिए पैसा जमा कर रहा हूँ, और मुझे इसका फ्यूचर में जो रिटर्न आना चाहिए वो किस लेवल पे अगर मिला तो मैं अपने गोल पे पहुंचूंगा. तो सबसे पहले तो ये लिस्ट डाउन करना कि व्हाट आर योर नीड्स एंड व्हाट आर योर वांट्स. सो व्हाटएवर योर नीड्स आर, focus on that first and try saving money towards that. So first thing would be investing with a proper plan. Second would be, a lot of people think that investing into the stock market is like buying a lottery ticket. कि आज लॉटरी टिकट खरीदी, 5 दिन बाद अनाउंसमेंट होगा कि यू आर अ मिलियनियर नाउ. बट इट्स नॉट हाउ इट वर्क्स. इट इज ऑल अबाउट स्टेप बाय स्टेप लॉन्ग टर्म आउटलुक रखना पड़ता है. ये जुआ नहीं है कि आपने वो टिकट खरीदा और कुछ मिल गया. इसके अंदर आपको समझना जरूरी है कि भाई एक लॉन्ग टर्म के लिए मैं म्यूचुअल फंड एज एन इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहा हूं टू बिकम पार्ट ऑफ सम ऑफ द बेस्ट बिजनेसेस ऑफ द कंट्री. And these best businesses will do well in the long run. India is a country, we are a capitalist country. It is our financial leaders who we invest on. ये अपने देश को सबसे आगे लेके जाएंगे. तो उनको लॉन्ग टर्म आउटलुक देने की जरूरत है हमें कि भाई उनको भी थोड़ा टाइम दो. और इतना मैं आपको कह सकता हूँ, आप उनको इनफ टाइम दोगे तो जितने भी ये जो कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने बड़ी बड़ी कंपनीज बनाई है, they will generate those profits, thereby taking up their share price, thereby taking up the mutual fund price, and hence your investment grows. So first, as I said, investing without a plan. Second is not having a long-term outlook. And third would be getting influenced by media and certain bad category of influencers. जैसे अभी मेरे पास कुछ लोग आते हैं तो मैं उनका पोर्टफोलियो देख के आपको बता सकता हूँ कि इन्होंने किसको सुना है, कि किसने इसको मिसगाइड किया है इंटरनेट के ऊपर. तो वो अभी पता चल जाता है हमको, because we know that there is a certain traditional way of doing things which has been working in the past, and these things will work for the future as well. Because discipline and patience पर ही आधा गेम है इसका, कि आप कितना अपने आप को इन्फॉर्म्ड रखते हो और कितना मिसगाइडेड रखते हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, now the media influence is also such कि, for example, if I Google once that is the Indian economy going to fall, so everything on my feed will become negative about why the Indian economy is going to fall. But on the other hand, if I Google something like is the Indian economy going to rise, then all the positive news around India will start coming on my feed. So personally speaking, me and my father have not read any newspaper for the last 20 years. We do not watch any news channels. We do not read any newspaper. We speak to fund managers. As I said, mutual funds के जो fund managers रहते हैं, क्योंकि वो research based scholars रहते हैं. वो आपको बताएंगे कि भाई जो काम का क्या न्यूज है, वो आपको क्या कहते हैं, ग्लैमराइज करके नहीं बताते. Fund managers are not sales people. They are research people. So when they discuss, with you, they are not trying to glamorize any situation. They are trying to tell you what is what. This is this. इंडिया में ये चीजें अच्छी होने वाली है, जैसे एक बड़ा पोर्ट बनने वाला है, उससे हमारा वाटर एक्सपोर्ट बढ़ेगा, उससे अपनी जीडीपी इंक्रीज होगी. दिस इज द काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन यू गेट फ्रॉम क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स. तो वो एक चीज है कि मैं बाहर का इतना सारा मीडिया मत देखो. अदर रिपोर्ट्स विल नॉट अफेक्ट अस फ्रॉम आउटसाइड. But if you are listening to good fund managers, reading their blogs, so then that is a good piece of information that you can have, and it even builds more positivity in you towards India.
कि भाई इंडिया ग्रो करेगा. We are headed towards the number 3 rank in general overall in GDP size. So, I would say that, Indian investors should be positive and avoid taking negativity from, media channels in general. So these would be the three things mainly, as I said. One is not having a plan, one is not having a long-term outlook, and third is getting influenced by media and influencers in general. But as now to avoid these kind of mistakes, the best thing, as I said again, would be to appoint a good financial advisor who is sane and clear in his objectives. कि भाई मतलब कि क्या करना है. So that would be the best way. Hire an expert, take their guidance, and build a portfolio that way. Next question. एज अ पर्सनल एडवाइस आप क्या एप्स या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स रिकमेंड करना चाहेंगे फॉर द बिगिनर्स फॉर कन्वीनियंटली इन्वेस्टिंग इन द म्यूचुअल फंड्स? So I am tied up with this company called NJ India Invest. So N for Neeraj, J for Jignesh. So NJ is based in Surat, and they are India's largest mutual fund distributor. So the mutual fund industry size is 60 lakh crores, out of which 2 lakh crores has been invested through NJ Group. So now what NJ does is, NJ has 30,000 advisors like myself all over India. And we use their online platform to service our clients better. For example, I cannot directly compete with an online platform. So I use NJ's technology to be at par with all of those top platforms which are available. Now, whatever I have seen that, their NJ app is very user friendly. The client can keep track of, things, their investments in real time. म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स तो बस खाली दिन में एक बार अपडेट होता है. रात के टाइम पे एक बार मार्केट बंद हो गया, उसका सब कुछ हो गया, तो रात को 9 बजे म्यूचुअल फंड का फिगर अपडेट हो जाता है. शेयर मार्केट का लाइव ट्रैकिंग रहता है. And after the recent upgrades of our user experience or user interface, our app is pretty much at par, with any other platform in general. And main चीज क्या है कि जो बाकी मैंने जो popularly heavily advertised apps देखे हैं, they are not necessarily at par with our compliance. Because NJ Group जो है is very strict about compliance. Sometimes we try to set the benchmark on what compliance should be. मतलब जितना जरूरत भी नहीं है उसके ऊपर भी करते हैं, because we feel कि भाई एंट्री इन्वेस्टर का थोड़ा डिफिकल्ट कर दो. मतलब बराबर से उसका वो डॉक्यूमेंट सब कुछ क्लियर करो कि जब वो एग्जिट करने की कोशिश करे ना, तो उस टाइम पे उसे प्रॉब्लम ना है. बिकॉज एंट्री लेना तो बहुत इजी है, लेकिन अगर आपने गलत पेपर वर्क या गलत चीजों से एंट्री कर ली, तो एग्जिट करने के टाइम पे आप पे क्या इंक्वायरी आ सकती है या क्या प्रॉब्लम आ जाएगा. यू मे नॉट इवन बी एबल टू विड्रॉ योर मनी ऑनलाइन डायरेक्टली. बट व्हेन इट कम्स टू एजे, आई एम श्योर दैट देयर कंप्लायंस इज वेरी गुड. वी आर पार्ट ऑफ द लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर इन जनरल. और उनका जो ऑल इंडिया प्रेजेंस है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे कुछ हुआ, तो देयर आर 5 ऑफिसेज इन पुणे इटसेल्फ where my investor could go say कि बॉस मुझे कुछ हेल्प चाहिए, my advisor is no more active, or no more in general. Corona, we did lose a lot of advisors, but NJ was able to guide their clients to more advisors and help people continue their journey. So again, as I said, these apps which work with distributors, where you get your online platform and you get the human element of interaction and planning, these would be the best way to go ahead. Having that combination of both, where you have a good guidance from a professional and having the proper online platform for your ease. So that I would recommend, mostly to my clients to, sign up with me on the NJ platform. Next question, please. What are the potential risks of investing in mutual funds, especially in India? So the Indian mutual fund industry is one of the best regulated industries in the world, I feel. I have worked in Dubai. I was working in real estate over there.
So over there, the real estate market is also excellently organized. So over there, you can say the real estate market is excellent and the financial market is okay. Here on the other hand, it is reverse, where our financial market is extremely well regulated. मतलब आप कह सकते हो कि जो इन द पास्ट हुआ है 92 में जो हुआ, केतन पारिक में जो हुआ, दीज ऑल थिंग्स को हमने वो जब क्या कहते हैं उसे रिपेयर करने की जरूरत पड़ी, उसे रिपेयर करने के चक्कर में वी मेड इट अ वेरी वेरी सिक्योर मार्केट. जैसे मैंने आपको बताया कि वो डॉक्यूमेंट्स भी बहुत क्लियरली सबके चेक होते हैं वो केवाईसी करने के पहले. So these are, so then again now we'll come down to liquidity. अभी if you are investing into some physical asset, तो जब भी आपको बेचना है उस टाइम पे इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, क्या आपको वो प्राइस मिलेगा जो आपके माइंड में है. जैसे मैंने अगर 1 करोड़ का घर खरीदा है, मुझे लगता है वो 2 करोड़ का हो गया, will I be able to exit it at 2 crores is the question. Because if somebody doesn't have affordability of more than 1.5 crores, तो मुझे 2 कौन देगा मार्केट के अंदर. तो एक वो चीज है कि एग्जिट जो है म्यूचुअल फंड में वो पता ही है हमें कि अगर आज मैंने ऑर्डर प्लेस किया है विद इन मार्केट आवर्स, तो वो 3 दिन मैक्स टू मैक्स 3 वर्किंग डेज में मेरे अकाउंट में जो मैंने ऑर्डर दिया था उसका 1-2% अप या 1-2% डाउन, इतना वो जो फ्लक्चुएशन एक होता है मार्केट के अंदर, उस बेसिस के ऊपर वो ऑर्डर प्रोसेस हो गया 3-4 दिन में मेरे अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा. तो सी रेगुलेशन इज आल्सो वेरी गुड, द लिक्विडिटी इज आल्सो फैंटास्टिक एंड यू नो रिटर्न्स वाइज तो मुझे पता ही है कि प्रोडक्ट बहुत ही सुपीरियर है मार्केट में. सो नाउ वेयर डज द रिस्क कम? द रिस्क कम्स फ्रॉम द इन्वेस्टर देमसेल्व्स नॉट अंडरस्टैंडिंग द प्रोडक्ट प्रॉपर्ली. वो जो कुछ चीजें मैंने आपको बताया ना कि इसमें वो थोड़ा डिसिप्लिन रखना है, एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव रखना है. मेन तो ये समझना है कि दिस इज नॉट अ लॉटरी टिकट, दिस इज अ बिजनेस इन्वेस्टमेंट. You are getting into the top businesses of this country. So give them some time to grow. So that is why, you know, to explain all of this, कि भाई underlying क्या है म्यूचुअल फंड का, और लोगों को वो थोड़ी और हिम्मत देने के लिए स्टॉक मार्केट के अंदर I conduct a 1 hour long session with all of my clients. मतलब वो 20,000 वाला हो, 2,000 वाला हो, 20 लाख वाला हो, वो कोई भी हो, they have to sit for 1.5 hours with me. I tell them everything, you know, from start to bottom. I explain to them our experiences, my father's experiences, और वो सबसे हमने जो सीखा है, because see, as you said, 32 years my father has been in this field, तो हमको वो क्लैरिटी जो है ना पिछले 15-20 साल से तो है एग्जैक्टली कि ये फंड में क्या हो सकता है, हाउ टू नेविगेट दिस, नीचे गया तो क्या करना है, ऊपर आ गया तो क्या करना है. So all of this is, you know, done over the last 5-6 market cycles that we have seen. तो इतना मुझे समझ में आ गया कि भाई इन्वेस्टर को सबसे ज्यादा खतरा अपने इमोशंस से है. इट इज नॉट फ्रॉम द मार्केट इटसेल्फ, क्योंकि मार्केट तो हर 5 साल डबल होते ही जा रहा है. ये क्लियरली हमको दिख ही रहा है कि मतलब यू नो कभी 2008 में सेंसेक्स 20,000 पे था, आज मतलब यू नो 16 इयर्स डाउन द लाइन वो 80,000 पे है. वो डबल होते ही जाते हैं. मैं स्टार्टेड 7 इयर्स अगो, वो 30-35,000 पे सेंसेक्स था, आज सेंसेक्स 80 के ऊपर चला गया है. बट व्हाट हैपेंस इज दैट इन दिस केस अभी जो इन्वेस्टर मेरे साथ ये 2018 से 24 तक है, दे एंजॉयड दैट राइड फ्रॉम 30,000 टू 80,000. बट बीच में मेरे पास ऐसे लोग आए थे जो 2021 में व्हेन सेंसेक्स वाज एट 62 और 2023 में they exited when the Sensex was still at 62. तो बीच में वो 62 से 55 से जाके वापस वो 62 पे आ गया. लेकिन अभी क्या हुआ, उनको वो 5 साल का पर्सपेक्टिव समझ में नहीं आया, तो वो 2 साल में पैनिक करना शुरू कर दिया. अभी क्या हुआ कि somebody who waited just another 6 months, their returns shifted from 5% per annum to 20% per annum, क्योंकि इतने में वो 62 से 80 का जंप आया फिर से 23-24 के बीच में. तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट लुक, इट इज अगेन अबाउट जस्ट द पेशेंस. आप अगर ये इतना बेसिक समझ जाते हो कि वो 5 साल जो हम बार बार बोलते ही रहते हैं कि पूरा पेशेंस का गेम है, इसमें अगर आपने वो पेशेंस रख लिया तो आपको वो एक रिटर्न अच्छा दिखेगा.
So that's why again, as I said, it requires 1 hour of training from my side also to give that encouragement and to give that knowledge to the investor. तो क्या जब अभी क्या ऊपर वाले मार्केट में सबको हिम्मत रहती है कि पैसा बढ़ते ही जा रहा है, बढ़ते ही जा रहा है, डालो डालो डालो. इट्स अ पॉजिटिव वाइब, यू कीप एडिंग मोर एंड मोर टू योर इन्वेस्टमेंट्स. लेकिन जब नीचे आता है तो उस टाइम पर भी हमें ये समझना जरूरी है कि these are the same top businesses of India which we are partnering with at the end of the day. जैसे अगर रिलायंस का शेयर ऐसे फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपए में अच्छा है और अभी मार्केट डाउन है और 60 में मिल रहा है, तो इट इज द सेम रिलायंस एट द एंड ऑफ द डे. इट इज स्टिल वन ऑफ द बिगेस्ट कंपनीज ऑफ इंडिया. मुकेश अंबानी स्टिल वन ऑफ द बेस्ट बिजनेसमैन ऑफ इंडिया. अगर उसके साथ 100 पे पार्टनरशिप अच्छी है तो 60 में भी अच्छी ही है, क्योंकि वो तो रिकवर करेगा ही. उसका अगर डाउन गया है तो वो नीचे नहीं रहते कॉर्पोरेट्स. दे आर हंग्री ड्रिवन पीपल एट द एंड ऑफ द डे. They don't believe in going down. They only keep up, 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 up. But you have to give that time to pivot for them also, to shift their business in a way, to align it, and then again keep moving forward from there. So as I said, the biggest risk comes from the three emotions, which is greed, fear, and boredom. तो ये तीनों चीजें अगर आ गई या एक भी आ गई तो you yourself will what you say interfere with your perfectly going plan. मतलब मैंने बहुत बार देखा कि एक अच्छा प्लान चल रहा होता है, हम ही अपने बॉर्डम में आके हमें कुछ और करना है, हमें कुछ और करना है, ये करके हम उसे छेड़ देते हैं. तो अगेन SIP प्लान इज वेरी व्हाट यू से इट इज अ पैसिव प्लान. इसमें आपको बैठना है, एक बार वो प्लान बन गया, यू जस्ट हैव टू डेडिकेट a certain funding from your side every month, and as your income increases, it is your responsibility to add more to that investment. But as I said, it is your money, it is for you only to be used in the future. So that would be the potential risks, I would say, that in investing. Next question, please. How one can assess the performance of a mutual fund? So before I get into the performances of mutual fund, I will just discuss the past performances of the 4 asset classes of India where any retail investor can invest into. तो अभी एक 1979 से पर्सपेक्टिव लेते हैं to 2024, which is about 45 years. I will just give you a short summary on how equity, fixed deposit, real estate and gold. तो ये 4 जगह है जहां पे आप अपना पैसा पार्क कर सकते हो, और ये चारों का परफॉर्मेंस कैसा है ओवर द लास्ट 45 years. So for example, somebody invested into the Sensex at 100 points. The Sensex has come up to 81,000 points now. So now if you look at the number of times multiplication, it is 810 times. तो किसी ने 1 लाख रुपया अगर डाला होता तो उसका आज 8 करोड़ 10 लाख जितना उसका जमा हो जाता. This 1 lakh would have become 8 crores 10 lakhs, 810 times. Now the same money, if somebody would have put into a fixed deposit or a fixed bond instrument, which is giving 10% yearly. So this money would have multiplied up to, you can say, around 80 times. 80 times. किसी का 1 lakh का 80 lakhs हो जाता फिक्स डिपॉजिट में अगर रखा होता तो. किसी ने सेम थिंग गोल्ड में किया होता तो उसका 1 lakh का 79 lakhs हो जाता. And if somebody would have invested into one of the best properties in Mumbai, which was at 1600 rupees per square feet, उसका आज प्राइस है 1,25,000 rupees per square feet. So if you divide it, it roughly comes down to 78 times. So now, first of all, तो पहले तो वो देखना है 810 versus 80, 79, 78. तो सबसे पहले तो अपने आप को एक वो सेटिस्फेक्शन देना पड़ता है असेसमेंट के पहले कि यू आर इन्वेस्टिंग इनटू द हाईएस्ट एंड बेस्ट परफॉर्मिंग एसेट क्लास विद इन दिस कंट्री. तो सबसे पहले तो आप सही जगह पर हो. सबसे पहले वो क्लियर होना चाहिए कि भाई सबसे ज्यादा पैसा इसी में बनेगा. एंड पर्सपेक्टिव वाइज व्हाट आई फील दैट इन द नेक्स्ट 20 years, even if the Sensex does half and the other assets perform double, I am still in the asset which is going to do better.
even if with half performance. So now again coming down to mutual fund evaluation. Now once you are investing into the mutual funds, now there are a lot of ratios one can apply to select or analyze the public domain में जो भी information available है उसके पर आप बहुत सारे ratios लगा सकते हो to analyze कि भाई इसका क्या risk category है, return कितना है, comparative performance क्या है. But to make it very simple, instead of using ratios and everything, one can look at fund ranking in general. So जैसे for example, there are these 4 quartiles in which the funds are ranked. So if your fund may not necessarily be rank 1 within its own category, but if it is part of the top 25% funds of that particular category, तो कैटेगरी टू कैटेगरी कंपैरिजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे फॉर एग्जांपल यू कैन नॉट कंपेयर द परफॉर्मेंस ऑफ अ लार्ज कैप फंड विद अ स्मॉल कैप फंड. तो वो दोनों एक अलग ही कैटेगरी ऑफ कंपनीज है, दोनों का रिस्क लेवल भी एक अलग होता है. वो समझना जरूरी है कि भाई कि आप बराबर एप्पल टू एप्पल कंपेयर कर रहे हो. तो नाउ ये जो एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन है ना, दैट इज इन द क्वार्टाइल रैंकिंग यू कैन सी. सो नाउ इफ योर फंड इज इन द फर्स्ट क्वार्टाइल एज पर रैंकिंग, so it means that within its category, it is in the top 25% performing funds within its category. And then you have to see कि भाई overall in the last 1 year, 3 years, 5 years, and 10 years, how has the fund ranked in each of these basically time frames? So now if your fund is ranking first in these quartiles, it means कि भाई it is already in the top performing funds of the country. And if it is ranking in the 4th quartile, so you can understand that you are in the bottom 25% of the funds which are available within the same category. So we also keep keep that track, and we try to get funds within the top quartile. But as I said, as your investment journey goes and you are investing into 5, 7, 10 mutual funds, so it will happen that some will rank in the first quartile, some will rank in the second, some might come in the third. Because future is very difficult to predict, but based on past performance, this is a very simple way to analyze कि भाई ये top ranked fund है, ये okay है, or is it one of the worst performing funds in general. So that is very necessary to understand कि मतलब कि like the ranking system, as they say, that would be the best way to analyze the funds on the 1 year, 3 year, 5 year, and 10 year परफॉर्मेंस कि किस क्वार्टाइल में वो आ रहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज. So the last question of this interview is, why is understanding risk tolerance important for mutual fund investors? So risk tolerance उसका मतलब ये हुआ कि आप कितना रिस्क ले सकते हो. ये अभी हर किसी का वो रिस्क टॉलरेंस लेवल अलग रहता है. जैसे फॉर एग्जांपल you meet with an average 60-year-old, they would be like कि भाई मुझे थोड़ा कम रिस्क लेना है, थोड़ा मतलब सिक्योरिटी ज्यादा चाहिए, और एक थोड़ा पार्ट का आप रिस्की इन्वेस्टमेंट कर लो. But then if you come and meet my father on the other hand, who has been an equity investor for more than 30 years, even today I can say कि वो हर चीज में ये बोलते हैं ले लो ले लो ले लो. मेरा अपने मतलब उनके खुद के पैसों से तो वो बोलते ही है कि भाई ले लो जितना रिस्क लेना है, because he understands the background of this asset. तो वो क्या करते हैं, वो अपना थोड़ा खर्चा साइड में रख देते हैं और फिर बाकी पूरा इक्विटी में डिप्लॉय कर देते हैं. So that is his style of investing, where he secures 2-3 years of his expenses, and then the rest remaining he will invest into the markets. तो रिस्क समझना आप कितना ले सकते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, because that way you will be able to select investments which don't disturb your peace of mind. See, at the end of the day, mutual funds are there, investments are there. These are all to generate a second source of income for you. But उसमें ये नहीं होना चाहिए कि आप जो नॉर्मल काम कर रहे हो अपना, your first priority, उसको वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल my first investment, I'll just tell you, I made it when I was 14, and when I was 16, the 2008 global financial crisis happened. अभी उस टाइम पे मेरा 12th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम चल रहा था और मार्केट आधा हो चुका था ऑन माय फर्स्ट इन्वेस्टमेंट. बट इन दैट टाइम व्हाट हैपेंड इज आई जस्ट टोल्ड माय सेल्फ कि बस पढ़ाई करो,
बोर्ड एग्जाम इंपॉर्टेंट है, वो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है, ये मेरा साइड का पैसा है, वो बाद में रिकवर हो जाएगा. But even with that one drop, my first investment did double in the first 6 years. Even despite the crash, you can say that a doubling was there. But the thing is कि वो रिस्क समझने के लिए मुझे भी थोड़ा टाइम लगा. वो अब एक 16 साल में कैसा समझता था, आज मैं 32 में जो उसको देख रहा हूँ, मेरा टॉलरेंस मुझे समझ में आ गया है और मुझे पता ही है कि वो डबल होने के पहले एक झटका लगता है. एंड आई एम ओके विद दैट झटका. कभी कभी तो वो मन होता है कि भाई एक डाउनफॉल आए तो मैं थोड़ा और पैसा डालूं उसके अंदर. तो एट दिस मोमेंट आई हैव अंडरस्टूड रिस्क वेरी वेल कि भाई कि वो नीचे भी अगर जाता है तो मैं उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखता हूँ. बट नॉट नेसेसरली एवरीबडी इज एट दैट सेम कंफर्ट लेवल विद इक्विटीज. हर किसी को थोड़ा टाइम लगता है अपना अपना एक्सपीरियंसेस समझने के लिए. अभी दूसरा एक रिस्क से ये समझ में आता है कि यू कैन सेट रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस. जैसे फॉर एग्जांपल इफ यू आर लुकिंग टू मेक a 40-50% return, one should be expected to lose 40% also. मतलब अगर आपको एक ऐसे एसेट में जाना है जहाँ पे 40% प्रॉफिट बन सकते हैं तो वहां पर वो 40% रिस्क भी बन सकता है. बट द थिंग इज यू हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दैट काइंड ऑफ थिंग कि भाई अगर मैं ऊपर जाने के लिए रेडी हूं तो नीचे आया तो मुझे उसमें भी थोड़ा पेशेंस फिर उस टाइम पे रखना पड़ेगा. फिर तीसरा ये कि रिस्क एक बार आप समझ जाते हो तो इट बिकम्स इजियर टू कीप अ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव इन जनरल कि भाई एक रिस्की एसेट ही है, लेकिन अगर मैं इसे एक इकोनॉमिक साइकिल, एक मार्केट साइकिल का टाइम दे देता हूं तो एट द एंड ऑफ दिस अप एंड डाउन साइकिल आई विल कम आउट प्रॉफिटेबली इफ आई हैव गिवन दैट टाइम फ्रेम. लेकिन अभी समझिए टाइम फ्रेम नहीं है तो देन वन शुड अंडरस्टैंड कि ये जो करंट पैसा है जो मुझे एकदम शॉर्ट टाइम में ही यूज करना है उस पे मुझे रिस्क लेने की जरूरत नहीं है. जैसे फॉर एग्जांपल हमने पुणे में हमारा ऑफिस खरीदा, घर लिया 2017 में, तो हमने 2007 से ही उसके लिए वो पैसा जमा करना शुरू कर दिया था. लेकिन क्या हुआ 2015 में भी रीच्ड आवर गोल. भले अभी तक प्रॉपर्टी डिसाइडेड नहीं थी, हमको खरीदना नहीं था उस टाइम पे, we were still 2 years away from our purchase, we still withdrew that money from the market and parked it into a safer place. फिर हमने वो नहीं किया कि भाई 3 बेडरूम का पैसा जमा हो गया और 2 साल रख देते तो 4 बेडरूम हो जाएगा, क्योंकि वो 2 साल में ऐसा ना हो जाए कि 3 बेडरूम का 2 बेडरूम हो जाए. तो जब भी आपका गोल अचीव हो जाए तो तभी वो निकल के उसको सेफ्टी में रख दो पैसे को, एंड फिर जैसे उसकी अपॉर्चुनिटी है यू यूज दैट मनी. So that also is again कि आपका एक्सपेंस कितना दूर है वो भी एक समझना जरूरी होता है before you take any risk on the money. So any money which is needed in the next 2 years, I would suggest please don't invest it into the equity markets. This is not a lottery ticket. This requires that minimum 5-year perspective like a businessman. कि आज मैंने ग्राउंड जीरो पे शुरू किया है, अभी पहले मैं हूं, फिर थोड़ा स्टाफ होगा, फिर प्रॉफिट्स होंगे, प्रोडक्ट्स बढ़ेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, फिर वो कंपनी का वैल्यू ऊपर जाएगा. तो ये समझने के लिए बहुत जरूरी है. और तीसरा वही है कि एक बार आप अपना रिस्क एपेटाइट समझ जाते हो तो इट बिकम्स इजियर फॉर यू टू मैनेज योर मनी. जैसे फॉर एग्जांपल आई हैव अ लॉट ऑफ पीपल हु आर व्हाट यू से विलिंग टू टेक a good risk with their money which they are giving me to invest into equities, because one particular section of their money is already parked into safer assets. तो उनको पता है कि भाई ये जो हम इक्विटी में डाल रहे हैं ये वॉलिटिलिटी के थ्रू घूमते रहेगा, 5 साल में शायद से डबल होगा, 10 साल में 5 गुना होगा, वो ऐसे ऐसे होते जाएगा. लेकिन जो मेरा एक सेफ्टी का जो पैसा है, जो मेरा खर्चा करने का जो पैसा है, वो मेरे लाइफस्टाइल को इफेक्ट नहीं आएगा because I've already secured that amount on the side. So then what happens is what you invested in the equity, उससे emotional attachment थोड़ा हट जाता है because you've already kept your खर्चा aside. तो अभी जो यंग इन्वेस्टर्स भी रहते हैं उनको भी मैं बोलता हूँ कि भाई आप है ना अपने 6 महीने का खर्चा तो है ना बैंक में जमा करने की कोशिश भी करो, इन्वेस्टिंग तो करो ही, लेकिन 6 महीने का खर्चा वो बैंक में भी जमा करके रखो कि in case you are planning on changing your job or something, you are not dependent कि अगले महीने का खर्चा कहां से आएगा. You can leave a place, search for something which is suitable to your role, your needs, without that tension of where the next paycheck is coming from.
तो वे कंटिंजेंसी कॉर्पस इमरजेंसी फंड जो हम कहते हैं वो यंग इन्वेस्टर शुड आल्सो हैव. For seniors, so obviously they do park a certain money, into safety funds and then, deploy the rest into the equity markets. So that's how, that's why understanding your risk capacity is very important for you before you get into investing into any of the asset classes. Bas, that would be. Thank you so much, sir, for joining this interview and making this very insightful. आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस रिगार्डिंग म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं और रिस्क टॉलरेंस और आपके जो इनसाइट्स आपने दिए आपके फादर के एक्सपीरियंसेस विल श्योरली हेल्प द बिगिनर्स हु वांट टू इन्वेस्ट इन द म्यूचुअल फंड्स इन फ्यूचर. थैंक यू सो मच, सर. Thank you, thank you. It was great. I'm very happy to be here, and thank you for approaching me. And I really do love going to colleges. A part of my CSR also involves me lecturing at colleges. So that where I try to graduate, what do you say, help fresh graduates to make better decisions from the start only. And thanks to your medium, I will be able to reach even more people and help them with my father's guidance. And This will really help. I hope this really helps people in them. That's the only thing. Yes, sir. Thank you so much, sir, for joining. It Thank was you. pleasure talking to you. Same here. Thank you very much.